Hello and welcome everyone. Am I perfectly visible and audible? फटाफट से thumbs up दे देना. और here we are with our AILET marathon. Finally we are here और आज की sessions थे AR and legal. तो पहले हमें legal start करना था, but then शशांक सर को आज AR लेना है पहले तो yes. शशांक सर को AR लेने देते हैं and then we'll meet you at 6 o'clock with legal session. So over to you, Shashank sir. Okay, I never said I wanted to take AR first, but I am forced to take AR first. So now let's start. So uh, let's start with questions. So we are going to try to finish as many questions as possible till 6 o'clock so that Aishi ma'am session will not be delayed. So let's Oh, start. before you start, sir, I'll take a leave. Okay, bye-bye. Students will meet you at, I'll meet you at 6. Bye-bye. Okay. Okay. Now, basically, we are going to start with the first question and we are going to see how we are going to approach these kind of questions and quickly, how can we get the answers very quickly. Okay. So now we are going to see what is the first, what is the number that is going to come in place of question mark. Okay. So, okay. So what's the answer? So how can we calculate? So if you look at this series, now you have 2, you have 9, you have 28, you have 65. Now, okay, clad aspirant, very nice. So basically, if you subtract 1 to each, so you are going to get 1, 8, 27, and 64. Now it is a series of perfect cubes. So 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube. So next number should be 125. But your actual number is cubes plus 1. So cubes plus 1, cubes plus 1, cubes plus 1, and cubes plus 1. So which of the following should be next number in the series? That should be 126, and that's going to be option B. So that was fairly easy. Okay. Now, so anyone who has any doubt or doesn't understand what question is saying, so just ask, do us the doubts. Now here we have the second question. The word Samsung is coded as this. How will you code Liberty? Okay. So how we are going to solve this one? So I'm going to give you some time to solve the question and then we are going to go ahead and solve the question. Okay. So what is the approach we are going to take to get the answer? So whenever you see a question that is of alphabets, now what is the first thing that you are supposed to do? So that is my first question. So if you are going to get a question that is of alphabets, now what is the first thing you are going to do? So the first thing that I'm going to say, the first thing we should do is to write numbers to the alphabets. So S is what? S is which number? So I can say A is first letter, right? So S is 19th letter. Okay. M is 13th letter. S is 19th letter. U is 21st letter. N is 14th letter. And G is 7th letter. In the first letter, there is a decrement of 5. In next letter, there is a increment of 5, then minus 5, then plus 5. So we have minus 5 and plus 5, and that is going
Good evening, Saransh. So basically, we have an arrangement where we are going to have plus 5, then minus 5, then plus 5, then minus 5, then plus 5, then minus 5, and so on. So now we are talking about liberty, right? So L is what? 12. I is what? 9. B is what? 2. So 12 minus 5 is what? 7. Okay. So first option and option D, these two are gone. So basically, I can directly say that first and fourth option are not right because first should be 7. Now I am going to talk about the next one, 9 plus 5. So that should be 14. So second place, we are going to have what? Second place, we are going to have 14. So 7 and 14, that gives us option B. Should I calculate other alphabets? No, because just by calculating first two numbers you can get the answer. So what I'm going to do, I'm just going to calculate first two and get the answer. Now let's move on to the next one, question number 3. Now what does it say? PQRSTVWZ. So there are 8 people and 8 people are sitting around a circle facing center, facing the center. Okay. So सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं. R is second to the left of Z, who is third to the right of P. Okay. Now your job is to make the arrangement. Good evening, Chandralekha. अब ये जो क्वेश्चन है, now if we are talking about this question is of circular arrangement. Okay. So how we are going to approach a question of circular arrangement? So first thing that I'm going to do is to make a circle for 8 people. And in circle, you already know that wherever you place the first person, it never makes a difference. So basically, but the first person whom you are placing is also very important because with respect to that person, you are going to make the complete arrangement. So how do you select the first person? So I am going to read it. R is second to the left of Z. Who is third to the left of P? Okay. T is third to the right of W. W, who is not immediate neighbor of R or Z. S is fourth to the right of Z. Q is fourth to the right of T. So which name is coming maximum number of times? Who is appearing maximum number of times? That is Z. So who's my first person? That should be Z. So I'm just placing Z over here. And remember that in this is going to be your left arrangement and this is going to be your right arrangement because everyone is looking towards the center. R is the second left of Z. So R comes out to be here. Who is third to the left of P? So Z is third to the left of P. So basically, P should be third to the right of P. So 1, 2, 3. So P is here. This is what we are getting. Okay. Now, S is fourth to the right of Z. So 1, 2, 3, 4. So S comes out to be here. So now I have placed 4 people out of 8 people directly. Okay. Now W, who is not the immediate neighbor of R or Z. So it means W cannot come here. It shouldn't be Z. W cannot come here. W cannot come here. So where you can place W, that is this place. Now T is third to the right of W. So right means 1, 2, 3. So this person should be T. And Q is fourth to the right of T. So 1, 2, 3, 4. That is Q. So who is going to be the last person left out? That is going to be B. So basically now I can figure out what is the answer. Now in which of the following pair, first person is sitting immediate left of second person. So basically first person is sitting in second person. So V and V is sitting immediate left of Z. So I am going to look for this arrangement. So I can say RV. RV is
So R is sitting immediate left of V. Z is sitting immediate right of V. So basically, I can say my answer of this question is going to be option A directly. Z is sitting immediate right, but I'm looking for immediate left. W and Q, these are not even immediate people. S and P, so S is sitting immediate right of P, not left of P. So it means this is also gone. So my answer of this question is going to be option A. So this is how we are going to do it. Now, next one, question number 4. Hmm. So how to get the answers of these kind of questions? If I am talking about this particular question, इसका आंसर जल्दी कैसे आएगा? कैसे करेंगे? सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सॉल्व नहीं करना होता, कभी अरेंजमेंट भी नहीं बनाना होता, हमारा एक ही काम होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना. ओके, सो बेसिकली आई नीड टू मेक अ 5 day प्लान. हाउ मेनी डिशेस वी गॉट 6 dishes. Okay, so out of 6 I'm going to use 5. Okay, now no dish may be repeated unless two other dishes are cooked before the repetition. So अगर मैं यहाँ पे एक कोई डिश है, एक दो दिन ले रहा हूँ, तो ए को मैं यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ, बट रेपिटेशन इज नॉट नेसेसरी. इट इज पॉसिबल, बट आई कैन नॉट मेक लाइक ए स्लैश ए. ओके, नाउ में जा रहा हूँ. सो एक्स 1 2 then x. Okay, and here we can see no elimination, no repetition. Here I can say no repetition. Okay, v w and v must not be made on consecutive days. So if I'm talking about w and v, and this question is saying v must be included, so v must be included. W and V, W and V must not be made on alternate days. In option C, they are made on alternate days, so C cannot be the answer. I eliminated one. Y must always be followed by X. So it means I got Y. After Y, I need immediate X. So first option is gone. Okay. Option B is also gone. Because after y must be followed by x. So if you are putting y, so after y you need to have x. So it means option B is not possible, option A is not possible, option C is not possible. So directly going to be stored. So in these kind of questions, don't make the arrangement, just eliminate the options, and that is going to be a quicker approach. Now let's move on to question number 5. Now this one. So how we are going to get the answer of this question? The next one.
So basically, what do we have? We got B, we got 8, we got Y, we got H, we got 27, we got S. Okay. Then we got N, we got 125. Now we got M, then we got V, we got 343, and we got E. So I am talking about the numbers only. So first number is 2 cube, then we have 3 cube, then we have 5 cube, then we have 7 cube. So basically all of these numbers are called cubes of prime numbers. So next number should be 11 cube. So what is the 11 cube? Do you know it? So even if you know or you don't know, it won't make a difference. Just if you understand the next number should be 11 cube, so just write 11 into 11 into 11. Now calculate the unit digit 111. So if you multiply 111, so unit digit of the product should be 1. Okay. If you don't know, it is 1331. Okay. So इसका मतलब यूनिट डिजिट मिडिल नंबर में तो वो आनी चाहिए, क्या कहते हैं, वन आनी चाहिए. So that can be either option C or option D. So this is what we figured out so far. So it means I can directly say option A is not my answer, option B is not my answer. Okay. And in remaining two options, I am getting the same number, 1331, 1331. Okay. Now there is going to be some confusion between alphabets. So basically I am going to write B as 2, Y is 25. Okay. H is what? H is 8, S is 19. Okay. N is 14, M is 13. Okay. Now V is 21, 22, E 5. अब यहाँ पे अगर पैटर्न देखो, so you are getting 6, then 6, then 8. Okay. यहाँ पे डिफरेंस देखो 7, 6, 8. Some random differences there, right? So it's difficult to understand what is the pattern. लेकिन अगर सेम पे देखो, इन दोनों का सम है 27, इन दोनों का भी सम है 27, इन दोनों का भी सम है 27, और इन दोनों का सम भी क्या है 27. Now in this, C is there in both the options. So C is 3. So sum 27 बनाने के लिए कौन सा लेटर होना चाहिए 24, right? So 24 is what? X. So answer of this question is going to be option 4. That is going to be C1331 and X. So basically you have to try hit and trial with multiple values, multiple arrangements, and then eventually you are going to get the answer. Okay. Now let's move on to the next one. 271 means why quit smoking? Okay. Can we solve this question very, very, very quickly? By the time you are done reading, you can get the answer very easily. And why I'm telling you that? Just read 271 is why quit smoking. Okay. Right. 480 means healthy valley habit. So healthy valley habit and why quit smoking. What is common? Nothing. Now I am saying means quit 524 means quit bad habit. तो अगर मैं ये वाला लूं why quit smoking and quit bad habit, what is common? The common part is quit. ठीक. अब यहाँ पे क्या कॉमन है? अब यहाँ कोडिंग में क्या कॉमन है? 2. So it means I can say 2 is quit. Now what question is saying? What does 8 represents? So 2 तो quit आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बचा? D. Now A, B, C are directly eliminated. You don't need to worry about the value of A. So when you are solving any question, just keep on looking at the options. ऑप्शन देखते रहो बीच बीच में, और एक बार आपका एक ऑप्शन आ गया और बाकी 3 एलिमिनेट हो गए, अगला आगे करो ही मत, छोड़ दो उसको. सो बेसिकली यहाँ पे 8, अगर 2 ऑप्शन में क्विट होता तो 8 कैलकुलेट करते,
लेकिन दो गिवन ही नहीं है। अगर लेकिन एक ही ऑप्शन में दो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तीन एलिमिनेट हो रहे हैं, सो व्हाई विल आई वेस्ट माय टाइम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 8। चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द आंसर? कैसे करेंगे सबसे पहला? ओके सारांश, ठीक है, बहुत बढ़िया। अप्रोच क्या लगाएंगे? सबसे पहले वही करेंगे, नंबर दे दो, ए इज 1, देन 4, देन 5, देन 8। मतलब कितने का इंक्रीमेंट आया? 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का। सो आई गॉट 3 1 3 1। सो अगला क्या होगा? 9। 9 का मतलब होगा यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट आएगा तो 9। 9 इज विच लेटर? आई। तो दो ऑप्शन गए। ओके, नाउ जे के एम पी निकालने से अच्छा तो मुझे सी याद है। सी की वैल्यू क्या है? 3। एफ की वैल्यू क्या है? 6। आई की वैल्यू क्या है? 9। एल की वैल्यू क्या है? 12। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 15। 15 कौन सा होगा? ओ। आगे आंसर सी। दैट्स इट। So basically, if you are going to write, so basically, when I solved, when I eliminated two options कि फर्स्ट वाला आई होना चाहिए, अब मुझे दोनों में से कोई भी एक निकालना है, दोनों नहीं निकालना है, दोनों में से कोई भी एक। सो आई नो दैट दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9। सो इसका मतलब मुझे पता है 3 की टेबल चल रही है, इसमें मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। जे 10 है, के 11 है, फिर एम अपना 13 है, पी अपना 16 है। सो सोचना पड़ेगा, नहीं कर रहे, छोड़ दो। ठीक है। सो इस तरीके से हमको फिगर आउट करना है और एक ही वैल्यू निकालनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हम्म। ओके ईशिता, ओके हर्षवर्धन, ओके। सो 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि ये हाईएस्ट मार्क्स हैं और ये लोएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है। इट सेज ओनली 2 पीपल स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए। सो ये हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, ए से ज्यादा दो ही लोगों के मार्क्स हैं। ठीक। डी स्कोर्ड मोर देन ए। सो अब डी का, डी फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन यहाँ इन दोनों में से कहीं एक रहेगा। बी स्कोर्ड लेस देन डी बट नॉट द लोएस्ट। मतलब बी का स्कोर यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन बी यहाँ पे नहीं है। तो मुझे ये पता है कि बी लास्ट प्लेस पे तो नहीं आएगा। ठीक। सी स्कोर्ड मोर देन बी बट नॉट द हाईएस्ट।
अब अगर बी इधर डाल दिया जाएगा, अगर बी को इधर ले लें तो सी के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि डी या तो इसमें होगा या इसमें होगा। तो इसका मतलब बी शुड बी दिस। नाउ बी इज नॉट द हाईएस्ट, सो सी शुड बी दिस, इट मींस डी शुड बी दिस। नाउ हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, दैट शुड बी डी। एम आई गेटिंग द आंसर? Yes, and sorry, who scored the second highest marks? And that is going to be C, and that is going to be option D. ठीक, very nice. So everyone got it. Cannot be determined कैसे होगा? Determine तो कर सकते हैं. Okay, let's move to question number 9. Again, इस टाइप का क्वेश्चन क्या हम कर चुके हैं? हाँ. ओके सारांश, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन क्या हमने किया हुआ है? यस, किया हुआ है. कब किया है? आज. Joseph must decide which songs A, B, C, D, E to sing in a 5-day performance schedule, with each song being performed only on one day. Okay. In accordance with the following conditions, C and D must not be scheduled on adjacent days. B may immediately follow E, but not vice versa. The first day must be either A or C. The last day cannot be D. Okay. Okay, Casey. Okay, Shita. Okay, Prashant. Okay, CLAT aspirant. Okay, Shaurya. ठीक है. Now, first of all, B is the midpoint. So B, B, B. B may follow E, but not vice versa. मतलब E के बाद सॉरी B के बाद E नहीं होना चाहिए. This is not a valid arrangement. यहां से ये तो गया, ऑप्शन बी. C और D एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, यहां से ये भी गया. फर्स्ट डे मस्ट बी आइदर ए और सी, सो आइदर ए और सी. सो इसका मतलब ठीक है. अब द लास्ट डे कैन नॉट बी डी, लास्ट डे कैन नॉट बी डी मतलब ठीक है. तो अपना इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपना इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी. नाउ व्हाई यू आर सेइंग नन ऑफ द अबव? सी और डी साथ में नहीं होने चाहिए, साथ में नहीं है. बी बी ई को इमीडिएटली फॉलो कर सकता है, लेकिन ई बी को इमीडिएटली फॉलो नहीं करेगा. इसका मतलब बी के तुरंत बाद ई नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी गया. फर्स्ट डे ए होगा या सी होगा, ये तो बन ही रहा है. लास्ट डे कैन नॉट बी डी, लास्ट डे कैन नॉट बी डी. दैट्स इट. Is it a valid arrangement? Yes. So am I getting the answer right? Yes. The answer of this question is going to be option C. Understood? ठीक है, चल. और बस यहीं पे गलती हो जाती है कि मे को रीड नहीं किया. If it was must, then C would have been wrong. This one. Okay, I'm just
अच्छा देखो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. So basically, what this question is saying that W and Z and W must sit together. ठीक है, यहाँ पे तो बैठे हैं, या नहीं बैठे, या नहीं बैठे, बी और सी गया. ठीक, एक्स कहीं भी बैठ सकता है, एक्स कहीं भी बैठ सकता है. ठीक है, y may only sit with v if y is also sitting with z. अगर y z के साथ बैठा है तो v के साथ बैठ सकता है. क्या यहाँ पे बैठा हुआ है? ठीक है, अकेले v के साथ बैठ सकता है, अकेले v के साथ तो बैठ ही नहीं सकता. अगर y z के साथ बैठा है तो v के साथ कैसे बैठेगा? और यहाँ पे y v अकेले के साथ बैठा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता. इसका मतलब आंसर क्या होगा? None of the above. Very nice, everyone got the right answer. That is none of the above. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, नाउ अपन आते हैं एलेट 2026 आने ही वाला है. चलिए, दिस वन. ग्लैमर को ऐसे लिखा हुआ है, सर्विंग को कैसे लिखेंगे? ओके, क्लैड एस्पिरेंट. ओके, प्रशांत. So what I'm going to do, I'm simply writing the alphabets. अल्फाबेट्स को करस्पॉन्डिंग नंबर के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद आगे समझेंगे क्या कह रहे हैं. So if you look at these numbers are actually very confusing because I can't see the arrangement. This is going to be -5, then it is going to be what? +1, then it is +7, then it is -1, then it is +2, then it is -1, then it is -4. But if you are going to break it into three clusters, so if I'm going to do this, then I'm going to have +1, I'm going to have +1, I'm going to have +1. Then again I'm going to have +1 and +1 और मिडिल वाले पे -1 कर. सो बेसिकली इसको भी अगर मैं ब्रेक करूं, सो आर में +1 कर देंगे. सो आर में +1 करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा आएगा. सो पहला अल्फाबेट कौन सा होना चाहिए? एस, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी डायरेक्टली. आई डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग एल्स. So when you write the numbers, corresponding numbers, these kind of things, these kind of very small things start becoming visible. So basically, you need to you need to form three groups. One is the middle alphabet group, then first three and last three, and see the arrangement in this, and you can clearly see the arrangement. चलिए, next question आता है इस पे. What is the answer? Everyone understood? How did we solve the previous question?
Okay, now what is the answer? Okay, Pavan. ओके शौर्य, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे? 4, 18, 48, 100, 180. ठीक है. What is the difference? We got a difference of 14. Then what is the difference? Difference of 30. Then what is the difference? Difference of 52. Then what is the difference? Difference of 80. Now these are some random numbers I can see, right? What is the differences of difference? That's going to be 16. What is the differences of difference? That's going to be 22. What is the differences of difference? That is going to be 28. अब इन सब में कितने का डिफरेंस है? 6 का. फिर इसमें कितने का है? 6 का. That is visible to us. Now what is the difference should be there? That should be 6. So ये नंबर क्या होना चाहिए? 34. Now next difference should be what? 114. So next number should be what? That should be 294. So what's the number we are looking for? That is going to be option D. That is 294. Just start looking at the differences and you are going to get the answer very quickly. चलो अगला नंबर देख अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस वन. Okay, Pavan. Okay, Shaurya. Okay, Prashant. Okay, Casey. Okay, Shraddha. So basically, how we are going to get the answer? Again, the same thing. 8 minute से कम का क्वेश्चन है ये. Now, how? X must not be last task. So check. If Arjun assigns Y to position 3, so Y to position 3, that's fine. X आखिरी टास्क नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों ऑप्शन में नहीं है. ठीक है. If Z is the first task, then it must be followed by either V or Y. So Z first task है, लेकिन V और Y दोनों ही नहीं है, तो ये तो गया. X and W cannot be prioritized sequentially. So X के तुरंत बाद W नहीं आ सकता है, तो X के तुरंत बाद W नहीं आ सकता, वो ना तो B में है ना C में. ठीक है. Now V must be followed by either W or Y. So V के बाद तुरंत W या Y आना चाहिए. So after V, we neither have W nor Y. So option B is also eliminated. Here after V, we have W. Okay, fine. X, Z, Y. So basically, no condition is being contradicted in option C. So answer of this question is going to be option C. Okay, Casey. I'll make sure it won't happen again. Now, the next one.
And thanks for the feedback. No one has given me this feedback before, so I'll work on it. Now the next one. Now let's see. How much time do you think you are going to take to solve the problem? There are 6 people, and we are talking about 6 days, Monday to Saturday. So, okay, Pavan. Okay, Shaurya. So we got Monday, then we got Tuesday, then we got Wednesday, then we got Thursday, then we got Friday, and then we got Saturday. So we are already talking about 6 days. Now P practices on Tuesday. So I got P practices on Tuesday. Oh, I'm writing Tuesday. Is practicing on Tuesday. Okay. And S practices on Thursday. So S is going to be on day. The number of hours, I don't know what are the number of hours for anyone. Okay. Now I am going to look at this point number 3. Number of hours which for which practice is done on every alternate day starting from Tuesday consist a multiple of 3 in decreasing order and a maximum of 10. So it means on Tuesday I got 9, on Thursday I got 6, and on Saturday I got 3. So I'm just going to write that down. So what I'm going to get over there, that is going to be, this is going to be 9, this is going to be 6, and this is going to be 3. And if I'm going to look at the option, look at option D. Have I got my answer? Yes. So that is directly, it is telling me that Tuesday P and 9. So Tuesday P and 9, option D. I am not going to solve it any further because it's not needed. I can directly get the answer by writing a couple of things in the arrangement or table. I can directly get the answer. So I'm not going to invest a lot of time in this particular set. Start next one. This one. I dislike these kind of questions a lot because I think I make a lot of errors in these kind of questions. You have to be very, very, very careful to get the answers right. Not these kind of questions are not difficult, but very, very careful. Okay.
Okay, Shaurya, fair point. So I'm looking for a consonant. Now, so if I'm looking for a consonant, so basically the consonant is alphabet that should be here. And before that, we need a numbers here and I need a symbol over here. Okay. So symbol, okay. So B is gone. K, after K, we have a number gone. Before D, I have a number. After D, I have a symbol. So I got first. That is my first one. Okay. Before T, I have a number. After T, we have a symbol that is also there. I got two. Now this is rejected. It is also rejected. It is also rejected. U is also rejected. R is also rejected. Before A, I got one, and after A, I got sign. So basically, this is also there. Now, should I check after this? Yes or no? Should I check after this? I don't need to because I'm getting already getting three alphabets, three consonants, and the largest value in the option is given as three. So basically, more than three is not even possible. So I'm directly going to mark my answer as D because once you got three and the option is not saying four, five, or six, so it means four cannot be the answer, five cannot be the answer. So I got only one option, that is option three. Now let's move on to the next one. This one. Now the next one. A is not a consonant. Okay, so I think I made a mistake. A is not a consonant, A is a vowel. So did I make a mistake? Yes, a little bit. Somewhere I made a mistake. A is not a consonant, A is a vowel. Okay, so I have to check somewhere else. Now I am getting anything else before W? Okay, no. No, I'm not. So answer of this question is going to be two, not three. I think everyone else made a mistake. So A is not a consonant. A is a vowel, and question is talking about consonant. So I think I made a mistake, and along with me, a lot of others have made a mistake. The same mistake. The answer of this question is going to be two, not three, and everyone made the same silly error, and that is A is not a consonant, A is a vowel. Okay, and question was talking about the consonants. Okay, now this one. In a certain code, faith is written as this, night is written as this. In the same code, what will be MTQOR? Okay, okay, clad aspirant, okay, Vranda. Now, if I'm going to check this one and this one, it is moving by plus 2. This is again moving by plus 2. This is again moving by plus 2. This is moving by plus 2. This is also moving by plus 2. So every alphabet is moving by plus 2. Now, the question is saying that coding is M. So basically, if I'm talking about actual word, this should be K. 2 before M. T, so two alphabets before T, that is R.
two alphabets before Q, that is O, and two alphabets before before O, that is M. KROM. Which option has KROM? That is option A. I am not going to code this one. This is the code. I need the word. So answer will be option A. So you don't need to code this one. This is the code. You need to find out the actual word. That's what question is talking about. Very nice. Okay. Now let's move on to the next one. What does it say? Okay, Bhumi. That was quick. What kind of arrangement is this? Alphabets are very confusing. Okay. Okay. So let me tell you, if you are going to write like this, look at this. This is X, this is Y. So X, this Y, and this Z. Then this A. I'm just taking a gap of 2. Then B. Taking a gap of 2. C. So this is my first series. Then I got Z, second alphabet. Then next one is B. Okay. Then next one is D. Then next one is F. Then after F, what do we have? We have H. After H, we got J. ठीक है. थर्ड वाला आता है E है. So we got E. Third one is E. Then what do we got? H. Then what do we got? K. Then what do we got? N. Then what do we got? Q. So in the we are going to have three parallel series. The first one, first alphabet, fourth alphabet, seventh alphabet, 10th alphabet. उसके बाद we have different second series. Second alphabet, fifth alphabet, eighth alphabet, 11th alphabet. उसके बाद अपने पास अगली सीरीज है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. पहली सीरीज में एक एक का डिफरेंस है, सेकंड सीरीज में दो दो का डिफरेंस है, थर्ड सीरीज में तीन तीन का डिफरेंस है, और हमको थर्ड सीरीज चाहिए. So Q, R, S, T. So which should be the next letter? That should be T over here. So answer of this question is going to be option B. So यहाँ पे तीन parallel series चल रही हैं. देखो, if you are going to write down the numbers now, it is going to be clear. 24, 25, 26, 26 के बाद वापस से एक आ गया, फिर दो आ गया, फिर तीन आ गया. फिर यहाँ पे देख लो, 26, 26 के बाद दो, मतलब सेकेंड लेटर, दो के बाद फिर चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, एंड आठ के बाद ये 10, आगे जो भी आएगा. उसके बाद फिर पांच, पांच के बाद आठ, आठ के बाद सॉरी के 10 नहीं है, के 11 है, 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20. सो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी टी. ओके, नेक्स्ट वन.
How many people are there? एक दो तीन चार पाँच छः और सात लोग बैठे हुए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः और सात। ठीक। P सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L और L जो है वो Q के सेकेंड लेफ्ट में बैठे। Q को बिठा दिया, एक दो सेकेंड लेफ्ट, एक दो तीन चार, इसका मतलब P यहाँ पे बैठे। अदो once I'm done, I think in couple of minutes, uh, after that legal will start. So this is left and that is right. Okay. R who's not the immediate neighbor of L, it means R यहाँ भी नहीं आएगा, R यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है। Sits immediate right of S, इसका मतलब S और R एक साथ आएंगे. First S, then R. So what is the placement for R? So this should be R, this should be S. Okay, so I got that this arrangement. Now T sits to the left of W. जो T है वो W के left में बैठा है, मतलब T should be here, W should be here. Now four of the it shouldn't be five. Three of the four are alike, so this is going to be three, and this is going to be three of the following four are alike in a certain way based on their seating positions. Now which one of them does not belong to that group? Okay, so PR left to right, ST left to right. So basically alternate people we are talking about. LQ left to right, LR is right to left. So which one is going to be odd one out? That is going to be option D. And that is going to be L and R. Very nice. So now with this, let's conclude today's session and let's wind up. So AILET 2026, we are going to discuss paper with the solution, English language, current affairs, general knowledge, and legal reasoning. And so I'm winding up and Ayushi ma'am will be joining with me. Ayushi ma'am. Thank you. Okay, so I'm done. Now it's your turn. Hello, ma'am. Ma'am, I think you are not audible to me or anyone else. Yes, ma'am, you Please are give me a audible. thumbs up. Yes. Chaliye. So I'll Okay. take your lead. Thank you. Okay. So, am I perfectly visible and audible to you all? Give me a thumbs up, फटाफट से. Am I perfectly visible and audible? Then we'll start. Good evening, good evening, good evening, Chandalika. Good evening, Sharash. Good evening. Good evening. कैसा चल रहा है? क्लैट कैसा गया? फटाफट बताओ. ये हमारा पहला सेशन है शायद. आफ्टर क्लैट इज डन, आई बिलीव. हम लोग सिर्फ एनालिसिस के टाइम पे मिले थे. This is one-on-one session. Good evening, good evening, good evening, good evening. Koksh. Yeah, I think I pronounced it right. If I'm wrong, please, I'm sorry. But yeah.
कैसा गया था क्लैट का पेपर? फटाफट से बताओ। अच्छा गया था या बहुत अच्छा गया था? जल्दी। या डिसेंट गया था? या एलआर तो मैं खुद देख के एग्जामिनेशन हॉल में आई वाज लाइक ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स आर लाइक गोना बी, उनको थोड़ा धक्का लगेगा कि यार एला। और मैंने पहला ही क्वेश्चन वो इलेक्ट्रोग्राफ वाला देखा था, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड आई वाज लाइक कि नाउ तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, एंड देन एलआर देख के तो आई नो थोड़े पैनिक कर गए थे आप। लेकिन मैंने हमेशा समझाया था कि अगर कुछ भी ऐसा आता है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, आप बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको उसी वक्त स्किप करके दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना, एंड उस सेक्शन को आराम से देखना कि हाँ अभी हमको नया कुछ चीज मिल गई है तो इट्स फाइन, और आगे जाके डोंट पैनिक। पैनिक कर जाओगे ऐसे सिचुएशंस में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड सिमिलर थॉट्स फॉर एलिट एज वेल। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी कि कुछ नया आ गया है जो आपको एकदम से ही समथिंग न्यू एंड आपने उसके लिए नहीं पढ़ा था, तो उस टाइम के लिए उसको स्किप कर दो एंड गो फॉर समथिंग जो आपको रेलेवेंट लग रहा है। उसको कोशिश करो कि एंड में उठाओ, ताकि आप वो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके एंड में उसके पास जा रहे हो, ताकि आप पैनिक ना करो। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप जब भी सेक्शन खोलोगे और पहला क्वेश्चन देखा उसके बाद ऑफ कोर्स पैनिक करोगे, बट को देख लो उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन शायद इजी हो। वैसे वो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था यार। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन था जो एलआर का एआर का था जो थोड़ा डिफिकल्ट था। बाकी दो क्वेश्चंस तो, एक इजी था, एक मॉडरेट था, एक डिफिकल्ट था फॉर एआर, एंड वन क्वेश्चन जो सीआर का ऑलमोस्ट था, दैट वाज प्रिटी मॉडरेट लेवल। तो हाँ आई नो कि वो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द एलआर, बट देन इट्स फाइन। चलो, एलिट की तैयारी कैसी चल रही है फटाफट से बता दो। फिर हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारा सब कुछ, आज का सेशन। वैसे हम ऑलमोस्ट सारी चीजें पहले भी कवर कर चुके हैं, बट स्टिल एलिट में क्या होता है, थोड़ा अगर एलिट का एग्जामिनेशन थोड़ा पेपर पैटर्न देखोगे तो थोड़ा स्टैटिक लीगल ज्यादा पूछा जाता है। थोड़ा स्टैटिक पूछा जाता है, थोड़ा अगर पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार हमें नहीं लगा था ना कि सब कुछ लीगल करंट अफेयर से पूछ लेगा क्लैट, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया ना, सब कुछ लीगल करंट अफेयर पे आ गया था। तो बस एक क्वेश्चन जो था जो पुराना था, दैट वाज सेम सेक्स मैरिज, एंड एक और कोई क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आउटडेटेड था बट सिमिलरली था। तो यार सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। स्टैटिक अगर पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस। बट यार गवर्नर वाला क्वेश्चन वाज रिसेंटली न्यूज, मैंने कितना कवर कराया है उसको लीगल करंट अफेयर्स में, कितना ज्यादा वो केस लॉ भी कवर किया है हमने। इफ इनफैक्ट वो केस लॉ से उठा के पूछ लिया गया था, कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, है ना। और मैंने केस लॉ भी कवर कराया, अगर आप लीगल करंट अफेयर्स की क्लास में आए हो, जो जो आया है उसको तो केस लॉ पढ़ पता होगा, राइट। तो फटाफट से बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन किस किस को पसंद है? इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट दो, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। कुछ रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं जो हमने थोड़े से फिगर आउट किए थे कि बार बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट उन्हीं पे कवरेज रखा है। ज्यादा इन डेप्थ अगर हमें जाना है तो मुझे बता देना, विल गो इन डेप्थ, बट मेजरली मैंने ऊपर ऊपर से ही कवरेज रखा है, ताकि जो भी हम ऑलरेडी आता आता आया है अभी तक, तो हम उसको ही डील करें। यार एलिट का कुछ भरोसा नहीं होता, सो एवरी टाइम यू सी एलिट इट्स अ न्यू, समथिंग न्यू, तो कुछ भी मिक्सचर हो जाता है, कैसे भी मिक्सचर हो जाता है, तो वो नया ही चीज आ जाती है, राइट। एक सेकेंड यार। ओके, ओके, सॉरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करती हूँ, देखो, एलिट का स्कोर कहीं ना कहीं 85+, 90+ इज अ गुड स्कोर, ठीक है। बट वी डोंट नो कि कट ऑफ कैसा जाता है, पेपर कैसा आता है, एलओडी क्या होता है पेपर का, तो अभी हम वी कैन नॉट से एनीथिंग। जब तक हमारे यहाँ पे पेपर नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो पेपर आता है, फिर अपन देखेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे, इजी था डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट क्लैट भी इजी लग रहा था। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे तो क्लैट इजी लग रहा था, बट देन जब बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट हुआ, एंड देन आई रिमेम्बर कि अगर मैंने एआर देख के मुझे भी डर लगा तो बच्चे को भी लगा ही होगा, राइट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, ऑन द फेस ऑफ इट हमें फर्स्ट इंप्रेशन यही लगा यार इजी था पेपर तो, बट देन वी गॉट टू रियलाइज नहीं, इट वाज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं बच्चे 90s में अटक गए, राइट। बट ठीक है, एलिट की बात करते हैं, हम क्लैट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्लैट को छोड़ दो परे, अब अपन एलिट पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताओ, हाउ इज एलिट प्रिपरेशन गोइंग ऑन फिलहाल, तो फटाफट मुझे ये बताओ। अच्छी चल रही है? मॉक्स दिया, ई मेलेट दिया था? ई मेलेट किस किसने लिखा था? हु ऑल रोट ई मेलेट? कैसा था ई मेलेट? स्कोर्स कैसे आ रहे थे, किस रेंज के स्कोर्स थे? मैंने पहले क्वेश्चन पूछा है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। टेल मी, व्हाट वाज द स्कोर इन ई मेलेट? कोई बात नहीं, चलो। देयर इज अ पेज व्हिच इज एलिट एनालिसिस बाय एलएसटी, व्हिच इज लाइव, यू कैन गो एंड सी इट, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितना सही स्कोर था, कितना खराब स्कोर था, यू विल बी एबल टू गेट to know about the same. Last time somewhere around 107 111 was a general category का cut off, so वहां पे जाके you can get the cut offs as well for each and every category. ठीक है, तो यू गो रजिस्टर योर सेल्फ देयर, और एलिट के बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकलते से क्या करना है, एलएसटी चैनल पे जाना है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द एनालिसिस एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ द यू नो एग्जामिनेशन हॉल, डायरेक्ट जाना, बिकॉज मैं भी लाइव आ सकती हूँ, मैं भी एग्जामिनेशन देने जाऊंगी आप लोग की तरह, मैं भी एग्जामिनेशन हॉल में रहूंगी, तो यस आई विल ऑल्सो बी राइटिंग द पेपर। ऑल्सो हम स्लैट की मैराथन भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे स्लैट की मैराथन, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट एज वेल, राइट। उसमें भी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अगेन, जो जो होगा वी विल बी एबल टू कवर, राइट। सो यस, अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं अब एलिट के बारे में, एलिट के अंदर हमारे स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राइट। अब अगर स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमको थोड़ा स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमेशा रिट्स के ऊपर आए हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आए हैं। रिट्स कौन कौन सी होती हैं, कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, उनसे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन है, जल्दी जल्दी बताओ। रिट्स कितनी प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर? लेट्स ब्रश अप एवरीथिंग, फटाफट। यस, हेबियस कॉर्पस, 5 करेक्ट, हेबियस कॉर्पस, एंड श्रेया, टेल मी मोर। मैंडेमिस, और habeas corpus mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition. Correct. That is the correct thing. In which article they are defined? थोड़ा बहुत ऊपर से पता है तो, इस बार प्रियम्बल पे भी क्वेश्चन था, दैट वाज आल्सो स्टैटिक क्वेश्चन। प्रियम्बल पे पूरा पूरा एक क्वेश्चन आया था, इफ यू रिमेंबर। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
So this was the terms that were used. और वो सबसे नीचे वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लग रहा था. The D option, but the option A was correct, right? Yes. Article 32 is for Supreme Court. 226 is for correct High Court. ओके सो यस एक बार वापस से ब्रश अप कर लेते हैं preamble sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political यहाँ पे वो एंड वाला टर्म शायद लीगल था राइट liberty of thoughts expression belief faith and worship equality of status and opportunity and promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity to the nation right in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. But usually ना पता है क्या होता है कि ये जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं with respect to preamble they are asked in judiciary examination. Majorly ये जो series wise questions पूछते हैं कि अच्छा tell us what is the series of each and every word is usually asked in judiciary examinations. If you understand what judiciary examinations are, they are the examinations for the judges. Okay, moving on, we will be studying a bit about fundamental rights and DPSPs. How many fundamental rights are there? ये हमने बहुत डिस्कशन किया है विद रिस्पेक्ट टू आवर लाइफ. इतने बार डिस्कशन हो चुका है कि अब तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए. जिसको नहीं पता है उसको तो ब्रश अप कर लेना चाहिए. लास्ट मोमेंट है जाके ब्रश अप करके आओ. अच्छा ठीक है हमने एक एक वो नहीं देखा. Yes, six fundamental rights. Habeas corpus is what? What is habeas corpus? जल्दी बताओ यार. इजी है ये तो क्वेश्चन. What is habeas corpus? Hmm. Correct, correct. Order to present a person. Yes. To have a body is the literal terminology of habeas corpus. It's basically the physical appearance of the claimed person. Yes, correct. What is mandamus? What is mandamus? Correct. ये रिट किसके अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती? There are few people, few dignitaries that we cannot issue this writ against. Who are those dignitaries? बताओ बताओ जल्दी बताओ. It's the president, governor of state, right? It can only be done.
Correct. Moving on with prohibition and certiorari. What do you mean by prohibition and certiorari? Both. फटाफट फटाफट टेल मी जल्दी जल्दी बहुत सारा कुछ बचा है रिकैप करने के लिए अरे कमेंट कमेंट गिव मी अ कमेंट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिशन व्हाट डू यू मीन बाय certiorari अरे certiorari प्रोहिबिशन कितने बार पढ़ा है हमने प्रोहिबिशन मीन्स कि जब हायर अथॉरिटी हायर exactly so the higher courts actually stop the lower courts to make any judgments which is out of their jurisdiction certiorari is what it basically means to quash a decision that has been taken up by the smaller court by a higher court right okay what is q warranto by what authority, right? We can always file Q warrant to know to legality of the official person. By what authority that you are taking the actions. Yeah, claim public office, correct. Moving on with next, that is fundamental rights, which has been asked. Yeah, by what authority? Correct. Cut. Every answer is given by Chandralekha, I believe. Okay. So fundamental right, there are six kind of fundamental rights. Name them. Name the six kind of fundamental rights. Type it down. Hmm. That is given under right to life is given under Article 21. Correct. There is right to equality, right to freedom, right to life, right against exploitation, right to freedom of religion, and cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Right. Right to equality के अंदर ही we come up with right to life. So we have right to equality, right to freedom, right against to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. These are the six type of rights that we have with respect to fundamental rights. Covering, हम right to equality की बात करें तो they starts usually from Article 14, goes up till Article 21, somewhere, sorry, only Article 14, and then we have our Article right to freedom, which is given under Article 19 to 22. Then we have uh, right against exploitation, which is majorly under 23 to 24. Moving to right to freedom of religion, which is given under Article 25 to 28, that is a range. And then the cultural and educational right, which is given under Article 29 and 30. Right to constitutional remedies, which is under Article 32 to 35. That is the major criteria that you should know of. क्वेश्चंस मेजरली यहाँ से पूछे जाएंगे आर्टिकल 21 से पूछा जाएगा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 19 से द गोल्डन ट्रायंगल दैट इज वेरी 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 फेमस हमेशा से उन पे क्वेश्चंस पूछ बनते हैं या पूछे जाते हैं ठीक है तो इन तीन आर्टिकल को अच्छे से कर लेना बाकी आप आर्टिकल को ऊपर ऊपर से गो थ्रू भी कर सकते हो ठीक है मूविंग ऑन लॉ ऑफ थॉट्स बाकी वी हैव डीपीएसपीस एक बार उनको अच्छे से देख लेना हम एक बार ऑलरेडी क्लैट के मैराथन में इसको कवर कर चुके हैं आप वो भी जाके रेफर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्टैटिक लीगल मैंने पूरा एक सेक्शन लिया था बीच में वो भी आप जाके रेफर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल
एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल, हमने सब कुछ वहां पे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट देन एक बार बस गो थ्रू कर लेना, कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है। थ्योरी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मूविंग ऑन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मेजरली नेग्लिजेंस पूछा जाता है हमेशा। तो नेग्लिजेंस, व्हाट इज नेग्लिजेंस? कैन समवन टेल मी व्हाट इज नेग्लिजेंस? बताओ बताओ, इफ आई एम नेग्लिजेंट coming here and not teaching you, that is called as negligence from my end. If there is AILET examination and we are not coming up with any kind of marathon, will that be called as a negligence? Correct. Not taking. Um, you're not actually, it's a duty of care and you're not obedient about the same. Yeah. Fail to observe reasonable care. Correct. करेक्ट। सो नेग्लिजेंस से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक ही पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट वी नेवर नो, राइट। ट्रेसपास से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेसपासेस, इफ व्हाट इज ट्रेसपास? आप ही लोग बताओ आज तो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने मेरा पुराना सेशन देखा है तो हम ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। व्हाट इज ट्रेसपास? हाँ, ओनली प्रॉपर्टी। ओनली प्रॉपर्टी। हम्म। हम्म। It can be trespass to a person and it can be trespass to property, movable or immovable. So there are two type of trespass. Okay, trespass to person, trespass to property, right? Moving on, we have strict and absolute liability and we have vicarious liability as well. But vicarious liability, you already know there is a relationship, there is a condition कि वहां पे एक relationship होना जरूरी है, that is employer and employee. Strict liability, absolute liability. Strict liability is for strict liabilities for individuals, whereas absolute liability is for enterprises with respect to anything which is dangerous and it got out of the reasonable care of the person who was supposed to take care of, right? Absolute liability के बड़े-बड़े examples we already have MC Mehta versus Union of India. We have Bhopal gas tragedy and a number of firecracker making factories. A number of, yes, Bhopal gas tragedy. Then strict liability is something which is if I had a venomous snake in my apartment and by chance it escaped and it there was my neighbor and snake has bitten my neighbor, then that is going to be what? A strict liability. Okay. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता क्या क्या आप लोगों को? व्हाट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? What are the essentials of contract? What is a contract? What is a contract? What is a contract? All agreements which are enforceable by law is known as contract, right? Now, agreements, essentials of contract are, what are essentials of contract? The first is pre-consent, then we have capacity of the person, a lawful consideration, lawful object, and and वो तो कैपेसिटी में आ गया ना, साउंड माइंड क्या होता है, वो तो कैपेसिटी में आएगा।
something which is legal and which is not void by law, right? These are the five essentials. Parties to the contract, which I told you already. Then we have free consent, lawful object, lawful consideration, and something which is not void, right? These are the five essentials of a contract. Then, what are types of contract? You might have heard a lot of types of contract. Acceptance is type of contract. Mhm. We have contingent contract, then we have bailment, correct, wagering agreements, agencies, partnership. ठीक है, देखो इन सब पे ब्रश अप कर लेना, ऐसा नहीं है कि वी हैव नॉट स्टडीड दिस, वी हैव ऑलरेडी डन एन नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेशंस। वेजरिंग और कंटेंजेंट में काफी सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक बार जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। और यस, बेलमेंट, राइट। सो ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बच्चों, यार ये तो मेरा रिवीजन सेशन होना चाहिए था, ये तो तुम, मुझे अब टेंशन होने लगा है। थोड़ा अपनी थ्योरी को ठीक करिए, ठीक है। यस, ओके। क्रिमिनल लॉ में अगर मैं बात करूँ, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेंस रिया, एक्टिस रियस, knowledge, intention. Mens rea is the mental state, then action rea, actus reus is the actions done by the person, and there should be an intent to actually commit a crime, right? Uh, can someone tell me what is the difference between an act and an omission? If you know, which is a I'm asking a high level question, but then I think you might guys already know. जिसको पता है फटाफट से थम्स अप दो मेरे को। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ के टॉपिक से पहले थोड़े बहुत हम अमेंडमेंट्स भी देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो शायद अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो एक बार अमेंडमेंट्स भी देख लेते हैं। सो द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज, विच इज द नंबर ऑफ द अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि काफी सारे अमेंडमेंट उसके थ्रू हुए थे, करेक्ट। देयर वाज अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट दैट वाज डन विद रिस्पेक्ट टू 42nd at the time of passed during internal emergency by Indira Gandhi, and it has given us fundamental duties. Then it provides for the curtailment of fundamental rights, basic structure of the constitution. Socialist secular republic came out of that and is called as a mini constitution for sure. Integrity of the nations is there, right? Um, 61st अमेंडमेंट से रिड्यूस हो गई थी वोटिंग राइट फ्रॉम 21 to 18, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। अगर बाय चांस पूछा गया कि कौन से अमेंडमेंट से 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पंचायती राज को 11th शेड्यूल में, एंड 74th से म्युनिसिपल गवर्नमेंट को मिला था इन 12th शेड्यूल, राइट, 74th से। um, 86th अमेंडमेंट देख सकते हो, राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात करता है। um, Yeah, all these are important. Then we have judicial system under the constitution. You should know about that same. We have Supreme Court, then we have High Court, then we have subordinate courts, sorry, district courts, and then subordinate courts, right? These are the basically, the the pyramid, I would say, of the all the jurisdiction. ठीक है, इसके अलावा you guys should know, एक second, और क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर डन विथ एवरीथिंग। यस,
Men's actors, yeah, we were studying about the important topics and थोड़े से जनरल एक्सेप्शंस होते हैं जो इंडियन पिनल कोड में थे. नाउ दे आर ट्रांसफर्ड टू व्हाट एक्ट? भारतीय न्याय संहिता, राइट? सो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. राइट टू प्राइवेट डिफेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. देन you all, I believe you already know what right to private defense is, right? Then the question can come from theft, right? Robbery, dacoity, extortion, all these questions. ठीक है, ये सब questions अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो then if you are appearing for SLAT examination, वहाँ पे interview rounds भी होते हैं, वहाँ पे भी ये questions पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये मत सोच के पढ़ना कि मुझे एलेट के लिए ही पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं ये सोच के भी पढ़ना कि आपको स्लैट के लिए भी पढ़ना है. ठीक है, तो मेक श्योर यू आर स्टडिंग फॉर दैट एज वेल. देन वी हैव क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. थोड़ा ब्रशअप करना है, ज्यादा नहीं घुसना है. सेडेशन, काउंटरफीट, जॉइंट लायबिलिटी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, wrongful restraint, wrongful confinement, criminal trespass, ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. So don't worry. Then coming up to few of the case laws जो आपको पता होने चाहिए, जो हमने काफी बार ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं. अगर जिसने मेरे सारे सेशंस देखे हैं लीगल करंट अफेयर्स के, तो हमने काफी सारे ऑलरेडी कवर करे हुए थे. एक सेकेंड. If I'm talk about the landmark judgments, with respect to few years, अगर मैं बात करूं 24 से अगर मैं बात करूं तो देयर वेर एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, दैट आई हैव ऑलरेडी डन. मैंने शायद इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूशनल या नहीं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बात की गई थी. एंड देन डज इट इवन वायलेट सिटीजंस आर्टिकल 191A राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्री फेयर इलेक्शंस, राइट? There was a five-judge bench, including the Chandrachud, Justice D.Y. Chandrachud. At that moment of time, he was a CGI as well. So they struck down to the scheme as unconstitutional, and court held that nations violated voters' right to know who funds parties. Okay. थोड़ा सा बैकग्राउंड कि 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम बना था, allowed anonymous donations to political parties via bearer electoral bonds, and later on it was not transparent, it was violating transparency, donations were given, though it involved the schemes with we have done an income tax act, so yes, we have done this as well. So it was all about that, and court struck it down. It was a landmark defense of democracy. It effectively ended the electoral bonds mechanism, ensuring political funding must be transparent, and everything was analysis noted, which was like addressed squarely the issues of people's right to know who is funding political parties. Right. Then we have State of Punjab versus Davinder Singh, which came the sub-classification and reservations. The legal issues was can states create sub-quotas within SCs and ST categories under Article 15 and 16, which was given earlier in Chinnamma case. If you guys have studied Chinnamma case, then yes, Chinnamma case in 2004 was a good law, and like with OBCs, classify more and less backward classes within SCs and STs. ठीक है, ये legal issues चल रहा था. वन की मेजोरिटी आई थी विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट, और उन्होंने अपहेल किया था सब क्लासिफिकेशन को. ऑल्सो इट ओवर रूल चिनम्मा केस, रूलिंग दैट स्टेट्स may subdivide SCs and ST quotas to benefit more backward class subgroups subject to data and rules. ठीक है, इसका थोड़ा सा लैंडमार्क अगर मैं बात करूं तो ऑल्सो इट क्लैरिफाइड कि आर्टिकल 341 जो था, जो प्रेसिडेंट को पावर देते थे टू स्पेसिफाई एज एससी नॉट वायलेटेड, एंड आर्टिकल 14 इज actually satisfied with respect to the same. ठीक है, impact was कहीं ना कहीं कि this was the landmark decision to permit state specific affirmative actions. States like Haryana immediately proposed sub quotas. um, ठीक है. Also, then we have Just Rights for Children Alliance versus Harish, which came somewhere around in 2024. It was the POSCO Act. Does POSCO criminalize mere possession or viewing of the images or the videos in the internet, intimidatory, immune or not, right? So there was a three-judge bench which came
held yes, and under Section 15 of POSCO Act, it was even non-commercial possession or viewing of child pornography is an offense. Okay, it ruled that IT Act safe harbor. We have done this, right? So it was all about that. Then in-ray demolition of structure, I think I've made a short and also a video on this as well, I believe. So इसके legal issues थे, can the executive demolish private property without standard procedure or notice? Do such actions violate fundamental rights? Yes, Article 21. Example was Article 21, right to shelter, equality, rule of law. What safeguards are required? Right? All these were the legal issues claimed under the same, case law. Then there was a two-judge bench, which held the the Justice Gavai and Vishwanathan JJ. It declared that summary punitive demolitions without due process are unconstitutional. Um, and they also issued the bulldozer guidelines. Authorities must give written notice 15 days. Actually, just there would be a hearing and will also involve higher officers with respect to the same. ठीक है इसका impact was extra legal demolitions, civil rights groups standards of protecting rule of law and minorities के ऊपर ये पूरा पूरा judgment था. Then we had Aligarh Muslim University versus Naresh Agarwal, minority institution status, parameters for an educational institution to claim minority status under Article 31. Can a body be established by statute be treated as found by a minority or not? और क्या उसके अंदर एमयू क्वालिफाई करता था या नहीं ठीक है दीज वर द लीगल इश्यूज इसके अंदर भी वी हैड स्प्लिट हुई थी 4:3 में द मेजोरिटी बीइंग गॉन विथ सीजय चंद्रचूड overruled Aziz Basha, holding that mere incorporation of statute does not negate minority origin. Then we had Judicial Recruitment Eligibility Judges Association versus Union of India. क्या इसके अंदर बेसिकली लॉ ग्रेजुएट डायरेक्टली टेक द सिविल एग्जाम और मस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एक्सपीरियंस जिसके ऊपर वी हैव ऑलरेडी डन यस 3 year ruling came that 3 year is a essential practice decision आया था इसके ऊपर and it is really necessary while you go ahead and give the examination. So आपको 3 साल की practice was compulsorily done. अगर आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते विच बेसिकली हैव led a lot many students to go back for the litigation because usually क्या होता था कि कॉलेज के बाद डायरेक्ट बच्चे अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने लगते थे and then they were not actually practicing. अब now students have gone to practice and they are practicing while preparing for the examination. तो यस काफी सारे बच्चों का ये इफेक्ट हुआ एंड काफी सारे बच्चे का फर्स्ट ईयर था उन्होंने नहीं किया हुआ था या फिर किसी का तो इट वाज द ऑलरेडी वो बहुत सालों से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नाउ दे हैव टू गो फॉर द लिटिगेशन नाउ दे हैव टू बी कम बैक फॉर द सेम तो yes this was case law that we were discussing. Also, then there is Bilkis Bano versus Union of India, which is around 2024 का case. इसके अंदर गुजरात remission order valid थे. Could the state of Gujarat grant remission for crimes committed elsewhere? Remission of heinous crimes violate rule of law. इन सब के ऊपर बारे में बात की गई थी. There was a two-judge bench. SC bench quashed the remission. It held that once convicts were sentenced, only the state of conviction ओके नाइस शॉर्ट फॉर्म मैं शॉर्ट फॉर्म देख रही थी ओके 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 सो यस वी वर वी कि डिसीजन क्या आया था दो जज बेंच पे बेंच क्वाश करी थी रेमिशन हुआ था एंड इट हेल्ड दैट वंस कॉन्विक्ट्स वर सेंटेंस्ड इन महाराष्ट्र the only the state of conviction that is Gujarat in effect but trial state was Maharashtra had jurisdiction. So Gujarat ordered was without application of mine and abuse of power. The court struck it down and ordered that 11 convicts return to jail. ठीक है, then I think we have already covered everything else.
थोड़े से पुराने जजमेंट्स भी हम देख सकते हैं जिन पे वी कैन टॉक अबाउट। सो कुछ कुछ जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर बात की गई। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमने अभी सेम सेक्स मैरिज का क्वेश्चन देखा था पूरा। तो यस, कौन से केस लॉ से दे गॉट द रिकग्निशन मिला था थर्ड जेंडर को, वर्स नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को मत भूलना, ठीक है। नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, which declared 377 of IPC as criminalizes homosexuality in India. So yes, that was made illegal with respect to the same. So we never know कि क्या क्या उठा के पूछ सकते हैं, right? Mithu versus state of Punjab, where 303 of Indian Penal Code came into picture, which the death sentence for murder committed by Allah. Then we have Navtesh Singh Johar versus Union of India. Again, the LGBTQ rights. तो थोड़ा सा एलजीबीटीक्यू राइट्स पे भी पढ़ के जा सकते हैं हम, ऑल्दो इट्स अ ओल्ड टॉपिक बट इट्स नॉट आउट ऑफ द रेलिवेंसी। जो हमारा पूरा पैसेज था, इट वाज ऑल अबाउट whether the marriage can be made legal for the same or not, right? Then we have KM Nanavati versus State of Maharashtra. It was a very famous case जहाँ से jury system खत्म हुआ था, ठीक है। आफ्टर दैट द jury system came down to halt, और उसके बाद से हमारे पास कोई केस लॉ नहीं है जिसमें jury system बैठा हो, ठीक है। Then we have Keshananda Bharti versus State of Kerala. It is a very important case law. It is a longest case law. If you become a lawyer or a law student, it's actually of 800 and 900 pages somewhat. So yes, it was 13 judge bench, which laid down the concept of basic structure of the constitution, right? Then we have which cannot be amended, right? Ever. Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, 39th constitutional amendment हुआ था, was declared unconstitutional by the Supreme Court. Then we have Muhammad Ahmed Khan versus Shah Bano case. It was about all about maintenance. Bachchan Singh versus State of Punjab, where constitutional validity of the death penalty under Section 302 of the NLU Code, read with Section 354 of CRPC, came down the picture. S.R. Bomai versus Union of India, 356 is not an absolute power. The court also held that secularism was part of the Indian Constitution before the word secular was added in the preamble. Then Joseph Shine versus Union of India, where adultery was made an offense. So tell me, what is the constitutional validity of adultery right now? बच्चे हैं या सो चुके हो आप लोग? Still a ground for divorce? Are you sure? Go and check it on. It's a homework for you guys. ठीक है, it's the same. Go and check it out. देख लेना. Then we have Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, where Aadhaar card is correct and valid only with certain restrictions. ठीक है. Hmm. Anything else that I should be covering? I think this is all. This is all, and other things you already might have covered. Uh, any questions that you guys have, you can raise your questions. I'm here to answer with respect to strategy. If I have any question with regard to strategy, we'll cater. हमारे पास अच्छा खासा टाइम है अभी.
नेक्स्ट 2 दिन में क्या करना है? नाइस क्वेश्चन। कुछ नहीं। आई थिंक मैंने एंडेड ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की हो गई है। जीके इज डन, इंग्लिश वाज डन यस्टरडे, एआर इज डन, टुडे लीगल इज आल्सो डन। आई थिंक सीआर इज आल्सो डन। एम आई नॉट रॉन्ग? ठीक है, तो बढ़िया 2 दिन कुछ नहीं करना है, चिल करो थोड़ा सा। जितना अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है तो ब्रश अप करो चीजें। मॉक लगाना नॉट अ गुड आइडिया। मतलब मैं तो नहीं लगाती। अगर मैं इतने पास होती एग्जाम के पहले तो यार मैं नहीं लगाती। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ना आप डिमोटिवेटेड फील करने लगते हो आपके स्कोर्स देख के। तो वो तो चीज मत ही करना। बाकी बी विथ योर फैमिली, रिवाइज करते रहो चीजें अपनी, ब्रश अप करते रहो। स्टैटिक ब्रश अप करो, थोड़े से मैगजीन्स और ब्रश अप कर लेना। मैगजीन्स जितने भी हमने पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू इन क्लासेस में जो तुमने पढ़ा है, तो मैगजीन्स थोड़ा अच्छे से ब्रश अप कर लेना। ठीक है, और लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेना। अम, कोशिश करना, आई वुड सजेस्ट कि आप चीजों को यू नो थोड़ा काम डाउन लेके चलो, क्योंकि सरप्राइज हो सकता है पेपर में, है ना। हमको नहीं पता कि पेपर का एलओडी क्या है, क्या आएगा, कैसा आएगा, एंड देन इट्स एलेट जहाँ पे सरप्राइजेस तो हमें पता ही है कि सरप्राइजेस होंगे होंगे। ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, राइट। तो उस पे वी हैव टू मेक श्योर कि सारी चीजें हों, बेटर हों। और कुछ भी ऐसा सब, जैसे मैंने अभी इनिशियली स्टार्टिंग में ही समझाया, कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी सरप्राइज आ रहा है, एकदम से सरप्राइज आ रहा है और हमको वो चीजें नहीं समझ आ रही हैं, तो स्किप दैट पार्ट फॉर दैट पार्ट वाइल, क्योंकि हमको थोड़ा रिलैक्सेशन होने का टाइम मिल जाएगा और हम दूसरा सेक्शन करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। तो आप जब वो वाला सेक्शन जाके करोगे तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा, राइट। एआर हमें पता ही है कि एआर तो आना ही है एलेट में, तो एआर के लिए पढ़ के जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एआर पढ़ के ही नहीं गए हैं, जैसे हम क्लैट में नहीं गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने क्लैट और एलेट दोनों की प्रिपरेशन करी थी तो एआर तो आपको फिर बन जाना चाहिए था, राइट। अगर हमने एलेट के बहुत सारे काफी सारे मॉक्स लिखे होते तो शायद हमें एलेट बन गया होता। ठीक है, लेकिन हमसे फिर भी अगर सॉरी एआर बन गया होता, फिर भी नहीं बना है तो हमको वी नीड टू ब्रश अप, हमको एलेट लिखना है इस बार, राइट। उसके बाद स्लैट भी है जहाँ पे अगेन आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग 2 पार्ट्स में आता है, राइट। तो वहां पे क्यूटी नहीं पूछा जाता है, एनालिटिकल पूछा जाता है। तो वहां पे स्टैटिक क्वेश्चंस अगेन ज्यादा होते हैं, करंट अफेयर ज्यादा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है पूरा। तो वहां के लिए थोड़ा अलग प्रिपरेशन होगी। we'll be coming up with the questions. ALET में we have already done a lot of questions, इसलिए आई डेंट ब्रिंग क्वेश्चंस आज, क्योंकि हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे, और इन सारे टॉपिक्स पे कर चुके हैं। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बट विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, एक बार आई सजेस्ट गो एंड स्टडी स्टैटिक। एक बार मेरे सारे लीगल करंट अफेयर्स के वीडियोस वापस गो थ्रू कर लेना। ठीक है, कुछ मत छोड़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये सब कुछ जो जो पेपर में आया था क्लास के, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग ऑन आवर चैनल। मतलब लीगल करंट अफेयर्स के जो मेरे मेन 3 से 4 टॉपिक जा रहे थे हर एक मंडे, वो मैंने सारे कवर किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने नया उठा के पूछ लिया है। मैंने ये भी बोला था कि प्रेम्बल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्रेम्बल से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो हुआ। तो आई रियली होप एलेट का पेपर आपका सबका अच्छा जाए। मैं ऑल द बेस्ट बोलने तो आऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट सेशंस तो होगा ही। और सेंटर के बाहर अगर कोई मिल जाए तो वहां पे मिलेंगे। चलो, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? बाकी जिस जिस जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती है। हमारा कुछ भी रिजल्ट आता है या किसी का भी एडमिट कार्ड लाइव होता है, बाय द वे स्लैट के एडमिट कार्ड आर लाइव। तो स्लैट का एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड टाइम के लिए मत छोड़ना। और 28 वाले एग्जाम का 18 दिसंबर को आएगा, ठीक है। तो वो भी जाके डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, प्रिंट आउट करवा के रख लेना। जिसने अभी तक एलेट के एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं कराया, एलेट का प्रिंट प्लीज प्रिंट आउट करा लीजिएगा। उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, जाके प्रिंट आउट कराइए एलेट का एडमिट कार्ड। और पेन, अपने 2 बॉल पेन तैयार रखना। कोशिश करना तो उसको भी दे सको, क्योंकि मैं अभी एग्जामिनेशन हॉल में देखा था एक बच्चा पेन ही लाना भूल गया था। तो देयर वाज अ नेबर जिसने उसको पेन ग्रांट किए, तो उसने 2 पेन दिए उसको, भाई तू ब्लू भी रख, तू ब्लैक भी रख। तो ये मत करना, ठीक है। अपना एक आईडी कार्ड का फोटोकॉपी या फिर आईडी कार्ड प्रॉपर लेके जाना, ठीक है। तो दोनों लेके चले जाना, एक फोटोकॉपी भी और एक वो तमें आईडी, ठीक है। और
वाटर वाटर लेके जाना, पानी मिले पानी ना मिले, वैसे तो टाइम ही नहीं होता। लास्ट ईयर कट ऑफ बताया था 105 से 106 था फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 90 से 92 था। ईडब्ल्यूएस 90 से 92, शेड्यूल कास्ट 80 से 85, शेड्यूल ट्राइब 75 से 80। ठीक है। ये वाला पेज जिसने अभी तक रजिस्टर कर दो। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रही हूँ। फटाफट से इस पेज पे जाके क्लिक करो। ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट एवरी डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इट। कौन कौन टेलीग्राम के चैनल पे है ऑलरेडी? ऑलरेडी है। फटाफट से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन करना है। सेक्शनल दे सकते हो। अपनी एनालिसिस एलेट में तुमने क्या क्या गलतियां करी हैं, एक बार वो देख लो। दैट इज गुड इनफ। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आई वोंट सजेस्ट टू गिव अ मॉक, मतलब सेक्शनल दे सकते हो। पुराने पेपर उठा के उन सबका सेक्शनल लगा सकते हो, ये कर सकते हो। बट देन डोंट डू एनीथिंग ऑन 13th। चुपचाप जाके सो जाना, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। और पूरा दिन एंजॉय करना, फेवरेट मूवी देखना, जिस किस किस ने धुरंधर देख लिया है? धुरंधर नहीं देखी है, जाके धुरंधर देख के आना। थोड़ा चिल करना, एंड यू नेवर नो कि रिजल्ट आ जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर।